मुझे ये वाला वीडियो शुरू करना है आप लोग को ये वाले पेन ड्राइव के बारे में बता के। अब आप बोलोगे आर्यन इस वीडियो का इस पेन ड्राइव से क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना है। पता है क्यों? बिकॉज ये ही पेन ड्राइव, दिस 8 GB पेन ड्राइव में ही मैं अपने दोस्त के कंप्यूटर से एक ऐसा गेम लेके आया था विच वुड चेंज द वे आई वुड लुक एट वीडियो गेम्स फॉर एवर। Was this exchange legal? No. Did the 10-year-old me care? No. Did I fall in love with the game instantly? Obviously. कितना मज़ा आता था गाड़ी और बाइक चलाने में, वॉर क्राइम्स कमिट करने में, गेम हर बार स्टार्ट से खेलने में, बिकॉज आई नेवर न्यू हाउ टू सेव इन दिस गेम। दैट ब्लू शर्ट, दैट पैंजर, दैट मशीन गन, दैट शिट हेलीकॉप्टर मिशन, दैट नोटबुक जिसमें आप इस गेम के चीट्स लिखते थे। ऑफ कोर्स आई लव दिस गेम। लेकिन मैंने आज तक ये गेम कभी ख़त्म नहीं किया। आई डोंट नो हाउ आई नेवर गॉट अराउंड टू फिनिशिंग दिस गेम। सो जब GTA 6 का सेकेंड ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी मैंने रियलाइज किया कि हे आई हैव नेवर एक्चुअली बीट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी, और उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ to understand this game, this modern piece of art we all loved as a kid, and also to talk about my experience of replaying one of the greatest games that Rockstar has ever made. मेरे दिमाग में एक बहुत फन आइडिया आया है। सिंस लोगों को GTA 5 के लोड टाइम का मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता है, I am going to make the chapter transitions of this video as long as GTA Vice City's load screen. Alright, are you ready? GTA 3 के सक्सेसफुल रिलीज के बाद, आई मीन ऑफ कोर्स GTA 3 वाज अ सक्सेसफुल रिलीज। GTA 3 ने पूरे ओपन वर्ल्ड गेम्स का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया था। द लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू द प्लेयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द गेम टू एक्सप्लोर द मैसिव वर्ल्ड ऑफ लिबर्टी सिटी एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और ये सारे फीचर्स होना इन अ 2001 गेम इज क्रेजी। GTA 3 was a massive hit, so it was natural that Rockstar would have tried to push this game forward. Rockstar फिर decide करता है to build an expansion या DLC base game के लिए. And then the development of the DLC is going really well. Till somebody in Rockstar, I am pretty sure वो बंदा डच जैसा दिखता होगा, वो बोलता है गाइज इसको एज अ सेपरेट गेम रिलीज क्यों नहीं करते हम लोग, वी जस्ट नीड मोर मनी। और फिर आर्थर बोलता है लेकिन हम इस गेम का नाम क्या देंगे, एंड तब डच बोलता है We are on the island of... ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी। Is it anywhere near Australia or Tahiti? सो 2001 में GTA 3 के सक्सेसफुल रिलीज होने के बाद बस एक साल में इन 2002 रॉकस्टार रिलीजेस ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी। Yup, your favorite game only had the development cycle of 1 year. I mean, एक साल में Vice City बनाना, the developers probably slept in the office, I'm pretty sure. GTA 3, GTA Vice City and GTA San Andreas. ये तीनों are built on the same engine, Renderware. But of course, if you're a curious little cat who likes to play around with the game files and modding the game, you already know that because I know what kind of mods you are installing in these games. So बहुत सारे assets जो GTA Vice City and GTA San Andreas में भी हैं, were originally in GTA 3. लेकिन GTA 4, Red Dead Redemption 2, GTA 5 और I think GTA 6 भी, ये सारे games are built on Rage, जो Rockstar का खुद का engine है. So no hot coffee mods in these games, you weirdos. Now this fact might surprise you, but GTA Vice City was super successful. I know, crazy, shocker, right? I mean, Rockstar इंडिया से भी काफ़ी पैसे कमा लेता अगर 99% बच्चे एक दूसरे को स्कूल में पेन ड्राइव स्मगल करके गेम ना बांट रहे होते तो। I mean, making 17.5 million in the first year of the game's release, that is a lot of money. और ऊपर से ये गेम पहले केवल PS2 पे ही आया था। Later on it came to Xbox and PC. और अब तो ये गेम फोन पे भी अवेलेबल है, विच इज स्टिल शॉकिंग टू मी। रॉकस्टार रियली पुल्ड द लास्ट ऑफ अस ट्रीटमेंट ऑन दिस गेम। इट्स बीन रिलीज लाइक 4 fucking times, बट है एटलीस्ट एवरीबडी गेट्स टू सफर थ्रू द हेलीकॉप्टर। आप ये गेम खेलते हो एज दैट ब्लू शर्ट वाला कैरेक्टर टॉमी वर्सेटी, जो प्रोबेबली इस सीरीज का सबसे आइकॉनिक प्रोटैगनिस्ट है। अब मैं पहले ही बता देता हूँ, GTA Vice City की स्टोरी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। इट्स अ क्लासिक nobody to somebody arc which you see in so many movies. Tommy Vercetti is sent to Miami after doing 15 years of prison time for his so-called family और for Sonny, जो essentially Tommy का बॉस होता है। टॉमी को मायामी इसलिए भेजा जाता है कि so that he can how do I say this without getting demonetized?
so that he can make a deal with the Colombians and increase the influence of Sunny's family in Vice City. And of course, classic GTA fashion में the deal goes bad, Tommy loses the money. So अब Tommy जो है वो बहुत ख़राब situation में फंस जाता है because उसका boss is like अगर मेरा पैसा मुझे वापस नहीं दिया ना, नहीं तो हेलीकॉप्टर वाला मिशन 1000 बार करवाऊंगा. And Tommy being stuck in this horrible situation is what sets this game's story into motion. So Tommy जो है वो वाइस सिटी के पावरफुल लोग जैसे कर्नल कोर्टेस, डियाज और एवरी, बाय द वे यही वो बंदा है जो तुम्हें हेलीकॉप्टर का मिशन देता है, इन लोगों से मिलता है इन द होप दैट दे विल गिव अ सॉल्यूशन फॉर हिज प्रॉब्लम. बट वो हेल्प तो नहीं करते बट ऊपर से उसे एक्स्ट्रा काम और दे देते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक योर एक्सपीरियंस विद योर कॉलेज प्रोफेसर्स. And that is my biggest issue with GTA games. You need to play 3-4 missions which have got nothing to do with the game story and अचानक से फिर एक मिशन आ जाएगा जो इस गेम की स्टोरी को प्रोग्रेस करेगा. और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि केवल GTA वाइस सिटी में है, इट्स अ प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ द ग्रैंड थेफ्ट ऑटोज. लेकिन एनीवेज वाइस सिटी में बहुत सारे अच्छे साइड कैरेक्टर्स भी हैं जैसे केन रोजनबर्ग जो टॉमी के साथ अटक जाता है उसके डीलिंग में. देन देयर इज डियाज जो थोड़ा सा पागल होता है. देन देयर इज 2 ब्रिटिश गाइज विच आई डोंट रियली लाइक. एंड देन देयर इज फिल जो बहुत ही पागल होता है. ओ बाय द वे आपने फिल को नोटिस किया होगा GTA 6 के ट्रेलर में भी. आई वंडर GTA 6 में और कितने कॉल बैक्स होंगे वाइस सिटी के. एंड देन देयर इज ऑल्सो लैंस. Oh, this white suit wearing, white infernus driving dumbass. Lance Vance Dance is the big smoke of GTA Vice City. अब बोलना मत spoiler, you guys are literally 12 years too late. It's your fault, not mine. और प्लस ज़्यादा मैटर करता भी नहीं बिकॉज आप इस गेम की स्टोरी से कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे. और ये प्रॉब्लम सिर्फ GTA Vice City के साथ नहीं है. दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर GTA 3, GTA San Andreas, GTA 5 and GTA Vice City. GTA 4 is the only GTA game in which I feel the protagonist is humanized. बाकी सारे GTA games की स्टोरी आप बस फेस वैल्यू पे एक्सपीरियंस करते हो बिकॉज इफ अ गेम्स राइटिंग हैज डन अ रियली गुड जॉब यू कैन नॉट हेल्प बट फील कनेक्टेड टू द प्रोटैगनिस्ट. I mean, of course, मैं समझता हूँ कि GTA games में the priority is the gameplay and not the story, and I get it. But I really hope that GTA 6 changes that. And my hopes are especially high after playing Red Dead Redemption 2. फिर स्टोरी में कुछ Haitians versus Cubans होता है which I don't really remember. It's all really forgetful. Like the only redeeming thing in this game's story is the voice actor for Tommy Vercetti. You your money back and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. It's Ray Liotta, the actor who played the lead in one of the greatest gangster films, Goodfellas. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब रॉकस्टार रे लियोटा को हायर कर पाया अपने गेम के लिए बिकॉज दीज गाइज क्लियरली लव द मूवी गुडफेलस. आई मीन कम ऑन, GTA 3 में देयर इज अ पोस्टर ऑफ द मूवी, वेल समवॉट ऑफ द मूवी. So getting your favorite movie's lead to voice the main character of your game must be a special feeling. लेकिन मुझे ये तो कहना पड़ेगा the voice acting in all the Rockstar games is phenomenal. Like मुझे नहीं पता था आप अपने दोस्तों को होमी बुला सकते हो. It's all thanks to GTA San Andreas. और भी मैंने बहुत कुछ सीखा था GTA San Andreas से, but we're not going to talk about it. Anyways, let's talk about my favorite feature of this game. The 80s Miami की setting for Vice City. The setting of Vice City वो मेरा favorite part है इस game का. Even as a kid, I'd spend hours driving around in this game. The bright neon lights of Vice City, the beautiful skyline and the NPCs. अगर आप इस गेम का मैप देखोगे उतना बड़ा नहीं है. इट्स अराउंड द साइज ऑफ लिबर्टी सिटी, द डाउनटाउन एरिया, लिटिल हेटी, लिटिल हवाना, द आइकॉनिक स्टारफिश आइलैंड एंड ओशन ड्राइव. एवरी प्लेस फील्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और अगर आपको इस गेम का ओपन वर्ल्ड उसके एकदम रॉ फॉर्म में एक्सपीरियंस करना है, I'd recommend emulating this game's PS2 version because इस गेम के PS2 version में there's an option called Trails which makes this game look really Vice City if you know what I mean. लेकिन ज़्यादा देर मत खेलना ट्रेल्स के साथ, मोशन सिकनेस हो जाएगी. और भाई द ड्राइविंग अराउंड एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाता है इस गेम में बिकॉज ऑफ द रेडियो. Like if you listen to the radio long enough, your music taste will get better at least 2 times. And then finally your Bumble profile will seem interesting with your music choices. Because guess what? Just writing video games won't cut it.
मुझे बचपन में और अभी भी माइकल जैक्सन के गाने इतने पसंद हैं. लाइक वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट्स इज दैट नॉट बीइंग born early enough to witness Michael Jackson perform in Mumbai. So listening to Billie Jeans on Flash FM, mind-blowing experience. एंड प्लस इफ यू वांट आप इस गेम में अपने खुद के गाने भी ऐड करके रेडियो में बजा सकते थे. आई डोंट नो व्हाई रॉकस्टार रिमूव्ड दैट फीचर. वाइस सिटी इतना हेविली इंस्पायर्ड है स्कारफेस से, विच इज एन वेरी ओल्ड बट वेरी गुड गैंगस्टर फिल्म. Both are based in the same 80s Miami setting. In fact, मेरा second biggest reason ये गेम खेलने का was actually Scarface. मैंने Letterboxd पे लिखा भी था I should make a video on GTA Vice City. आप Vice City 5 मिनट नहीं खेल सकते without drawing references from Scarface. I mean Diaz का पूरा mansion and that office, it's straight up inspired from the movie. In fact, even Diaz की shirt भी, well, somewhat. ऑनेस्टली अगर आपने अभी तक स्कारफेस नहीं देखी है ना, यू आर मिसिंग आउट ऑन वन ऑफ द फाइनेस्ट गैंगस्टर मूवीज आउट देयर. एंड मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा, आप पहले स्कारफेस देखो एंड देन GTA वाइस सिटी खेलो इफ यू डू डिसाइड टू प्ले द गेम. फन फैक्ट, स्कारफेस हैज ऑल्सो पुल्ड अ डॉन 2 मूव. स्कारफेस का PS2 पे गेम भी है. डॉन 2 में यू प्ले एज SRK, इसमें यू प्ले एज एल पचिनो. एज फॉर द गेम इटसेल्फ, you can skip it. It's not as good as Dawn 2. What the fuck is wrong with this guy? Am I kidding me or what? All the GTA games have massive and impressive sandboxes. मैं तो ये अभी भी कहता हूँ that all the GTA games are like a big playground जिसमें आप जो चाहे वो कर सकते हो. और GTA 6 will easily be the biggest playground yet. Like GTA Vice City का map will probably be like 2% of GTA 6 का map. मेरे hopes GTA 6 से बहुत ज़्यादा high हैं. And also I'm not surprised that the game got delayed. No way this game was coming out in 2020. Yep, this is the part where I talk about the helicopter mission. So why not start by talking about the missions in this game? आप सबको लगता है कि हेलीकॉप्टर वाला मिशन मुश्किल है? You guys have it so wrong. आप लोगों ने ये गेम आज तक खेला ही नहीं है. Helicopter mission is like the beginning of the difficulty in this game. Because Vice City is truly an evil game. The random difficulty spikes in this game is crazy. Game पहले 3-4 easy mission देगा. Oh, drop this person, destroy this car, deliver this before the time expires. और फिर अचानक से जाओ टैंक चोरी करके लाओ आर्मी से. I am convinced इस गेम में इतने सारे मिशंस हैं जो कभी प्ले टेस्ट भी नहीं हुए होंगे. कुछ मिशंस आपको 10-12 अटेम्प्ट्स ले सकते हैं. इस गेम की डिफिकल्टी गोज फ्रॉम बीइंग लाइक रेड डेड रिडेम्पशन लेवल की डिफिकल्टी टू अचानक से डार्क सोल्स की लेवल की डिफिकल्टी बैक टू रेड डेड रिडेम्पशन की डिफिकल्टी. आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मिशंस. आधे से ज्यादा लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कभी मिशंस करते ही नहीं थे. एक मेजर अपडेट जो GTA Vice City में था फ्रॉम GTA 3 was in vehicles. There were a lot more vehicle options in Vice City. Like come on, Vice City की Infernus, still the best Infernus in all the GTA games. लेकिन सबसे बेस्ट अपग्रेड फ्रॉम GTA 3 to GTA Vice City, the bikes. GTA 3 में 2 व्हीलर्स थे ही नहीं, वो बकवासी एक्टिवा भी नहीं थी GTA 3 में. And I mean, come on, does anybody hate the iconic PCJ 600? It's the kind of bike you'd see John Abraham ride in Doom. बट मैं जानता हूँ लोग अपना आधे से ज़्यादा टाइम कौन से व्हीकल में स्पेंड करते थे. एंड नो, इट्स नॉट द इन्फर्नस. No, it's not the PCJ 600. And no, it's not the van from the helicopter mission, but the tank. Like आपने कभी Vice City experience भी किया है अगर कभी 6 स्टार लगा के टैंक ना चलाई हो. And I love the concept कि अगर कोई भी व्हीकल टैंक को छू भी जाती है ना, it explodes. Does it make sense? No, but I really love it. The gunplay in Vice City is as good as the gunplay in Dawn 2. So not good. और मैं मजाक नहीं कर रहा जब मैं ये कहता हूँ द TTK इन वाइस सिटी इज क्विकर देन कॉल ऑफ ड्यूटी. लाइक अगर कोई गैंग मेंबर या NPC के पास SMG है और उसने पहला शॉट लिया है, यू बेटर रन. लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड इस गेम का गोर बहुत फनी है, स्पेशली यू नो जब वो ब्लड का फाउंटेन निकलता है मारने पे. हिलेरियस. वाइस सिटी में बहुत सारे वेपन्स अवेलेबल हैं प्लेयर के लिए. आप उन वेपन्स को इस गेम के ओपन वर्ल्ड में ढूंढ सकते हो या एम्यूनिशन. कम ऑन, look at you pretending like that's how you found your weapons in Vice City. Stop lying. That's not how you found your weapons. You found the weapons the same way I found the weapons in this game. Say it with me. NUTTERTOOLS. Nutter tools.
Cheats were an integral part of the GTA experience. Like मैं सोच ही नहीं सकता ये 3 GTA खेलना without using cheats. Even as a kid, I had this small book जिसपे मैं सारी GTA games की cheats लिखता था, just so that I could remember what the cheats are. Leave Me Alone, Aspirin, Hisoyam, Professional Tool, Full Clip, Panzer, Chitty Chitty Bang Bang, Rocket Man, Seaways, which is my personal favorite just because of how awkward the tires look. बस गलती से, मैं कह रहा हूँ गलती से भी enter की मत दबा देना, because this blue shirt idiot cannot swim. And this is why CJ is my goat. Like Tommy आर्मी वालों से, गैंगस्टर्स से, पुलिस वालों से, सबसे लड़ जाएगा. लेकिन the moment he sees a small body of water, that shit scares the living crap out of him, which is a beautiful metaphor for how powerful the mother nature truly is. I mean 2012 is still the most scariest horror movie that I have ever seen. अब जैसा मैंने पहले बोला था, इस गेम की स्टोरी में टॉमी गोज फ्रॉम बीइंग अ नोबडी टू समबडी, एंड टू मेक टॉमी रियली फील लाइक टोनी मोंटाना ऑफ वाइस सिटी, you are supposed to buy assets in this game. Like you can buy the Malibu Club, the car showroom, the printing press, the ice cream shop, and the this जहाँ मैं कभी नहीं जाता 100%. All of these assets come along with a few missions as well, with the most interesting one being the Malibu Club wala, because Malibu के club वाले में you get to do a heist, which is still really cool comparing to other story missions in this game. और आपका ये assets खरीदना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस गेम की स्टोरी में प्रोग्रेस करना है तो. Like if you do not own enough assets, you cannot play the final mission of this game. And here comes the interesting part. Vice City does not have a money cheat. Yup, Hisoyam does not work in Vice City. And the assets are super expensive. तो मुझे वाइस सिटी लिटरली ग्राइंड करना पड़ रहा था. द टैक्सी साइड क्वेस्ट जिसको मैं टाइम पास समझता था, आई हैड टू सीरियसली प्ले इट, बिकॉज अगर आपके पास एसेट्स नहीं है यू कैनॉट प्रोग्रेस इन दिस गेम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वाइस सिटी मेड मी रिस्पेक्ट the vigilante, the ambulance and the taxi side quest which I thought were trash. Honestly, Vice City का highlight उसका gameplay ही था, and even 12 years later, this game is still a lot of fun. I know कुछ लोग को GTA 3 या GTA San Andreas पसंद है, and I get it. मैंने भी सबसे ज़्यादा San Andreas पे ही time spend किया है. मैंने Vice City पहले कभी अच्छे से खेला नहीं था, so I really wanted to experience Vice City before I go ahead and experience GTA 6. तो मैंने सोचा why not make a video on this game as well. And after beating this game, I can 100% tell you that this game deserves all the success that it received. Now the question is, should you go back and play Vice City? And my answer is a hard no. क्योंकि अगर आप ये गेम वापस खेलने जाओगे ना, 15-20 मिनट में आप ये गेम से बोर हो जाओगे and you'll start to get annoyed because that nostalgia magic will start to fade away very soon. Because what you miss is not the feeling of playing Grand Theft Auto Vice City, but the feeling of being a carefree kid with no jobs and responsibilities, which is far and far away from today's reality. But hey, if you feel like playing the game again, then definitely go for it. After all, आप ही का time है, आप ही का decision है, मुझे क्या problem है. I just want to take a moment to thank all my members again. Thank you so much, whether you're a producer tier or a gamer tier. It means a lot that you are supporting this channel. And yeah, I always try my best to repay it well. And I hope this video was nice. And I'll see you guys in the next video.